All right. So this is a question that is given to us that there is an asset that depreciates at the end of 10% per annum for the first 2 years and then 8% per annum for the next 3 years. The depreciation being calculated on the diminishing value. Now here there are two different rate of interest that are given to us. One is 10% and the other is 8%. So if you all remember, जब हम simple interest या compound interest जब हम calculate कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जब different rate of interest दिए होते हैं, तो the formula is like this: P 1 plus R. This is the first rate of interest, then this is the second rate of interest in the second year, then in the third year and fourth year. The same will be the case here, but since this is a case of depreciation, so here it will be 1 minus R. So now the question is asking that if the cost of the asset is 45,000 rupees, we need to find out the average rate of depreciation and the depreciated value of the asset at the end of 5th year. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट कि एट द एंड ऑफ 5th ईयर हमारी मशीनरी की आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है वो वैल्यू क्या थी. We'll start with this. So now see, we are talking about year number 5. So the value of machinery at the end of 5 year will be your cost of the machinery initially, that was 45,000. 1 minus my rate of interest. I am just writing the formula here so that you can understand. And you also need to know that the answer that you will get after solving will be basically the value. Yes, whosoever's mic is on, please switch it off. हाँ जी, तो क्योंकि मशीनरी की लाइफ सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 साल की थी, ठीक है, as per the information that is given to us. So the value that you will be getting after solving will be basically the scrap value, the leftover value of that asset, particular asset. So now the depreciated value of the asset at the end of 5 years will be 45,000. 1 minus 10% rate of interest was being charged for the first 2 years, and then after that the machinery was getting depreciated at 8%. Now when you solve it, you will get 28,388. This is the depreciated value of the asset at the end of 5th year. There's nothing new in this. Okay, this is a last year 2022 question that came in your exam for 7 marks, I think 5 marks. Okay, so we have got the depreciated value of the asset at the end of 5th year. Now another part of the question is asking, we need to find out the average rate of depreciation. एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ये क्यों पूछ रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहले हम 10%, पहले 2 साल के लिए हम 10% चार्ज कर रहे थे, नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हम 8% जो है चार्ज कर रहे थे डेप्रिसिएशन. सो नाउ इट इज आस्किंग दैट व्हाट इज बेसिकली और व्हाट कैन बी द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो हाउ डू यू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. अब देखो मेरी स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है, और द वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर 28,383.80. I know my scrap value. I know my original cost of machinery. I am assuming that I had charged my average rate was equal to R. So here I am charging R rate of interest for total of 5 years. Yes, is this formula clear to everyone how I basically came to this thing? स्टार्टिंग में मैंने क्या करा है कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकाली है एसेट की एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ठीक है, तब वहां पे 2 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे. अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. दैट्स व्हाई आई हैव अज्यूम कि अगर एक ही डेप्रिसिएशन का रेट होता 5 सालों के लिए तो इट वुड हैव बीन आर. सो सिंपली जस्ट अप्लाइड द फॉर्मूला है.
All right. So now the next thing that we'll do is, we know our scrap value, that is 28,383. In the exam, you can ignore the decimal, all right. And the cost was basically 45,000. ये बनेगी आपकी इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को बेसिकली क्या करना है, solve out करना है. So what I'll do is, I'll take my 45,000 here on left hand side in the denominator. I'll get 0.63073 1 minus r raised to the power 5. This is what I will be getting. Now, in order to further solve this question, what we need to do is, we need to take log on both the sides. So what we'll do is, multiply by log on both sides. देखो, अगर तुम कैलकुलेटर के थ्रू इसका कर सकते हो, अंडर रूट 5 अंडर रूट कर सकते हो, यू कैन डू इट बाय दैट वे. अदरवाइज आई सजेस्ट यू गो बाय लॉग. ठीक है. अब इस 5 को बेसिकली क्या है, मैं बेसिकली यहाँ पे डिवीजन में ले जाऊंगी नीचे. सो आई गेट 0.04004 log 1 माइनस आर. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब जो मेरा लॉग है वो एक ही तरफ पे है. तो ऐसा होता है ना कि अगर एक साइड पे मेरा सपोज एक्स स्क्वायर है, तो दूसरी साइड जाके इट कन्वर्ट्स इनटू अंडर रूट, है ना. So in the same way, what I'll do is, I'll take this log on the other side. So this log will become anti-log when it will come here. समझ आई बात? लेफ्ट हैंड साइड पे आके बन गया अब ये एंटी लॉग. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस एंटी लॉग की बेसिकली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. 0.9118 equal to 1 minus r. Value of r will come to 0.0882. You multiply it by 100, you will get the percentage. It will come to 8.82%. So this is your average rate of the depreciation of the asset. क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ लॉग और एंटी लॉग निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है. ठीक है. और अब